The digital world is moving at breakneck speed, but are we keeping up? Especially if we talk about senior citizens, this rapid change can be overwhelming. Misinformation, scams, and social isolation can lurk just a click away. But what if there was a way to navigate the online world with confidence? Vishwas News introduced a media literacy program for senior citizens in its 7th edition of Sach Ke Saathi Media Literacy series. Sach Ke Saathi Media Literacy campaign was supported by JNI and Knowledge Partnership with MICA. Our mission was to equip senior citizens with the critical skills needed to identify fake information and messages and to stay safe online. With this initiative, we reached 15 states and 52 cities across the country, delivering content in 7 languages: Hindi, English, Urdu, Punjabi, Gujarati, Marathi, and Telugu. The campaign Sach Ke Saathi Senior was successfully run with the concept of SURE. S stands for See, U for Understand, R for Recheck, and E for Execute. Our comprehensive modules, co-created with the help of MICA, covered several important aspects of digital literacy: identifying fake information, verifying information accuracy, digital safety, how to avoid online scams, and even some tips on identifying deepfakes. Since SKS seniors happened during the election season, we also focused on voter awareness. To ensure greater access, we created these sessions in hybrid mode. They were conducted both virtually and physically. Our impact was measured through overall reach and detailed pre- and post-training feedback surveys. From Uttar Pradesh to Telangana, Gujarat to Delhi, our sessions empowered senior citizens to critically analyze sources and make informed decisions about the content they engage with. With the support of partners like Fact Crescendo and Newsmeter, our program's total reach has grown to an impressive 12.7 million people. Our 3-level strategy included direct training participation, broad knowledge dissemination through PDFs, and extensive social media and print campaigns. We have garnered significant attention through our Jagran New Media portal as well as our print editions of Dainik Jagran, with over 247 online news stories, 36 print news features, and 33 print ads. Our program has even been selected by International Fact-Checking Network for Global Fact 11 in Sarajevo, showcasing our global recognition. जहाँ तक मेरा ख्याल है, लोगों का बहुत कम अभी ये ज्ञान है और वो कभी भी इसके चक्कर में आ सकते हैं। उसे निकलने का रास्ता आपने बताया। सब्जेक्ट बिल्कुल नया है और देश को कम से कम गुड़गांव को एक नई दिशा देने के लिए आपका प्रयास सराहनीय है। यहाँ पर मुझे आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत परेशान थी फेक न्यूज़ से और कई बार चेक करने के लिए अपने दोस्तों को बोलती भी रहती थी, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे चले जाती थी जिसका बाद में बहुत अफसोस होता था। तो यहाँ सीखने को मिला। अब हम आगे उसे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी अपने स्तर पर चेक करें और जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनको भी इस बारे में बताएं। आज का जो कार्यक्रम विश्वास न्यूज जागरण समाचार पत्र के माध्यम से IMS के जो कैंपस में किया गया वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है और ज़्यादातर ये सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी लाभदायक था। ये एक नई प्रकार की आपने शुरुआत की है, पहले ऐसा कभी किसी भी संस्थान ने शुरू नहीं किया। जो इन्फॉर्मेशन और जो यहाँ पे जिस उससे बुलाया था और जो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इनके लिए वास्तव में धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन और मैं क्योंकि कई NGOs से जुड़ा हूँ, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ, जो आपने ये फॉर्मेट आज दिया है, मैं इसको मैसेज को गाँव में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जा करके डेफिनेटली पब्लिक को बताऊंगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव है। Now our senior citizens are more confident, well informed and equipped with the skill sets to combat misinformation and navigate the digital landscape. For more details, you can also visit our webpage Sach Ke Saathi, where you can find additional resources and the details to stay updated with our progress. Stay informed and join the movement. Visit our dedicated webpage for Sach Ke Saathi to stay updated with our resources and progress. Together, we can combat misinformation and build a more informed and connected community. We would like to thank the JNI for their support and MICA as our academic partner. Thanks to our training partner, Fact Crescendo and Newsmeter,
A special thanks to Vishwas News.